अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार, मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मिमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं तालीम जे हवाले सां। लाॻीतो कोरोना जी चौथी लहर सबब तालीमी इदारा ऐं इल्मी दरसगाहूं बंदि हुअण सबब जिते शागिर्दनि जो नुक़सानु थियो आहे, जिते प्राइमरी खां यूनिवर्सिटियुनि ताईं जेका तालीम आहे उहा सख़्तु मुतासिर थी आहे, त उते सिंध सरकार जे इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ पिणु सॼी सिंध में मुज़ाहिरा थींदे असांखे नज़र आया। आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन्स पारां, वालदेन पारां ऐं केतिरनि सुञाण धुरियुनि पारां इन फ़ैसिले जी सख़्तु मज़म्मत कई वई त जिते होटलूं खुलियल हुजनि थियूं, बाज़ारूं खुलियल हुजनि थियूं, SOPs खे फॉलो करण जी तलक़ीन कई वञे थी ऐं कोरोना वैक्सीन जो शर्त लाज़मी क़रार ॾिनो वञे थो, त उते स्कूलनि जी तालाबंदी छो? स्कूलनि खे बि SOPs ऐं वैक्सीनेशन लाज़मी हुअण जो सर्टिफिकेट ॾेखारे करे स्कूल पिणु खोलिया वञनि त जीअं ॿार वधीक उन्हनि जो मुस्तक़बिल तबाह न थिए। वाज़ रहे त सॼी दुनिया में कोरोना जी लहर खां पोइ लाॻीतो ऑनलाइन जेको तालीमी निज़ाम हो, ऑनलाइन क्लासिस जो निज़ाम हो, उहो पिणु जेकॾहिं सॼे सिंध जी ॻाल्हि कजे त एतिरो ख़ासि को लाभाइतो साबित न थी सघियो आहे। केतिरनि ई वालदेन पारां लाॻीतो स्कूलनि जी बंदिश सबबु ऐं ॻरियूं फीसूं न भरे सघण जी सघ हुअण जे करे उन्हनि पारां पंहिंजे ॿारनि खे स्कूलनि मां ॿाहिरि कढियो वियो आहे। वालदेन जो चवणु हो त हू ॿारनि खे मोबाइल, लैपटॉप या मुसलसल नेट जी फ़राहमी नथा मुहैया करे सघनि, जंहिंजे करे केतिरा ई ॿार पढ़ाई खां वहिजी विया। सिंध हुकूमत पारां ताज़ो जेको नोटिफिकेशन कढियो वियो त मुहर्रम अल हराम गुज़रण खां पोइ जेका कोरोना जी जेका शरह आहे उहा 16 सैकड़ो ताईं पहुची चुकी आहे, जंहिंजो जवाज़ ॾियणु आहे स्कूलनि खे 3 अगस्त ताईं बंदि कयो वियो। पोइ वरी अणॼाणायल हुकुम ताईं स्कूलनि जी बंदिश कई वई, जंहिं ते सॼी सिंध में मुज़ाहिरा थिया। आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पारां इन फ़ैसिले खे मञण खां इनकार कयो वियो। केतिरनि ई स्कूलनि खे खोलण जो चिता ॾिनो वियो, जंहिंखां पोइ अॼु तालीम वारे वज़ीर सां मुज़ाकरात कामयाब थिया। सूबाई वज़ीर सरदार शाह पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो वियो त वॾे वज़ीर पारां जेको ऐलान कयो वियो उहो सिहत जी सूरत हाल खे नज़र में रखंदे कयो वियो। फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 30 तारीख़ खां स्कूल खुलंदा ऐं उहे स्कूल खुलंदा जिते वैक्सीन जेका हूंदी उहा 100 सैकड़ो हूंदी। न सिर्फ़ु ॿार उस्ताद बल्कि ॿारनि जा वालदेन पिणु पंहिंजो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट ॾेखारींदा। अॼोके प्रोग्राम में तालीम जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त इन तमामु घणे प्रेशर खां पोइ हुकूमत खे पंहिंजो इहो फ़ैसिलो वापसि वठिणो पइजी वियो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे चेयरमैन आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जनाब। शाह साहब, क्या कहेंगे, कंटिन्यूसली हमारे मुल्क में तालीम के हवाले से जो सूरत हाल रही, ऑनलाइन क्लासेस रहीं, फिर हुकूमत के बदलते फैसले, एक नोटिफिकेशन आता था, कुछ दिन स्कूल खुलते थे 50% से जो है लोग हाजिरी के साथ, उसके बाद फिर मुसलसल सारी चीज़ें खुलती गई। आखिरकार ये जो 30 जून वाला फैसला था, इसको बड़ा चैलेंज किया गया कि हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। जी जनाब, देखिए बहुत शुक्रिया ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखिए अभी बात यह है कि हम इस तवील अरसे से जो है वो हुकूमत से कहते आए हैं कि तालीम को अहमियत दें, तालीम को जो है वो फोकस दे दें, तालीम के में डिसीजन लें तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। तो अभी जब लास्ट मीटिंग हुई तो हमने ये देखा है कि स्टीयरिंग कमेटी के अंदर फैसले तो कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी मर्जी से जो है उसको तब्दील भी कर दिया जाता है। तो जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के एक डिसीजन लेते हैं तो फिर कम अज कम उसको ऑनर भी करना चाहिए। तो अभी जो 30 अगस्त का तो था ही नोटिफिकेशन, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया था कि ताहुक्म सानी तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर जो है एक गुस्सा कह लें, एक एजिटेशन कह लें, एक टेंशन कह लें जो क्रिएट हुई और लोग बाहर निकले। तो हमने सिर्फ जो है वो बहालत मजबूरी हमें आज जो है सुबह में रोडों पर आना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि इस मुल्क के अंदर जब तक आप रोड पर ना निकलें, जब तक आप एहतजाज न करें, आपके कोई भी मामला तय नहीं होते। तो हमें भी यही रास्ता अख्तियार करना पड़ा और आज हम सुबह में तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान, असातिज़ा, वालिदैन और उनके बच्चे भी सब इसमें शामिल थे और आज एक आवाज़ होकर हमने मुतालबा किया कि तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोला जाए। तो उसके बाद तारिक साहब, ये बताइएगा कि इस बात को कैसे हुकूमत कह रही है कि हमने बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया, क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद जो कोविड की शरह है, जो रेशो है, वो कराची की अगर सिर्फ बात की जाए, वैसे तो पूरे सिंध में है, लेकिन सिंध की राजधानी कराची की बात की जाए तो 16% तक पहुंच चुका है। तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी थी, जब लोगों की सिम बंद करने की बात हुई, उनके अकाउंट्स बंद करने की बात हुई, सैलरी बंद करने की बात हुई, तब लोगों की एक बड़ी कतारें हमें दिखने में आई। तो वालदेन की वैक्सीनेशन के हवाले से, बच्चों की वैक्सीनेशन या असातिज़ा की वैक्सीनेशन के हवाले से लाएअमल कैसे तरतीब दिया जाएगा? देखिए अभी ये इसी पर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है। आज भी बात हुई, मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया था
اور اس پہ یہی بات کی گئی ہے کہ بھائی دیکھیے کورونا جو ہے وہ تو اب لمبا چلنے والا ہے, ہمیں اس کے ساتھ زندگی طارق صاحب گزارنی ذرا پڑے گی. اگر آپ لاؤڈلی بولیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی جی, کہ آج جب منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو اسی بات جی سے تبادلہ خیال کیا گیا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہے اور ہمیں اب اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. جی جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے اندر لیونگ بھی سیکھنی پڑے گی. تو اب ہم نے یہی راستہ نکالا ہے کہ فوری طور پر تمام اساتذہ جو ہے فلی ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے تعلیمی اداروں کے اندر. 80 سے 85% جو ہے وہ اساتذہ ہو چکے ہیں فلی ویکسینیٹڈ. جی باقی جو پارشل ویکسینیٹڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی 100% ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ویکسینیٹ ہو جائیں. اور ایک بات یہ طے کی گئی ہے کہ اگر اساتذہ 100% ویکسینیٹ ہو جائیں گے کسی بھی ادارے کے اندر تو پھر تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا, ان کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتے رہنے دیا جائے گا. ہاں, SOPs پر عمل درآمد پوری طرح کی جائے گا. 50% حاضری ہوگی, بچے دور رکھیں گے, ماسک پہنیں گے, سینیٹائزر ہوں گے, تاکہ یہ سارے معاملات سے جو ہے نا بچے بچ سکیں. کیونکہ بچے نو ڈاؤٹ جہاں بچوں کی ہم کہتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے وہاں بچوں کی ہیلتھ بھی ضروری ہے. بہت زیادہ لیکن اب ضروری. ہمیں ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اب بچوں کی تعلیم کی طرف بھی فوکس دینا پڑے گا. کیونکہ جہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے سیشن کے اندر ہارڈلی 30 دن بچہ جو ہے وہ فزیکل کلاس کے اندر فزیکلی اسکول کے اندر موجود تھا, ورنہ اسکول نہیں آ سکا. آن لائن ایجوکیشن ایک وقتی سبسٹیٹیوٹ ضرور تھی ہمارے ملک میں, لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. ہمیں بچوں کو اسکول بلا کر پڑھانا پڑے گا تاکہ وہ جو تعلیمی لاس اتنے عرصے سے ہوتا جا رہا ہے وہ مزید نہ ہو اور ہم پرانا لاس بھی بچوں کو کور کرا سکیں. آف کورس جو فزیکلی پریزنس ہوتی ہے اس کے تو کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ریسپانسبلٹی اسکول والوں نے, پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والوں نے آن کی ہے, گورنمنٹ کا تو چلیں گورنمنٹ دیکھ لے گی کہ اساتذہ فل ویکسینیٹڈ ہیں, والدین کے ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں گے, یہ ریسپانسبلٹی لی گئی ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو اعلان ہوا ہے, جو مذاکرات آپ کی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ 100% جو اساتذہ اور جن کے بچوں کے والدین ویکسینیٹڈ ہوں گے وہی اسکول فی الوقت کھولے جائیں گے. جی دیکھیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کی گارنٹی تو ہم لیں گے اور ہم آگے بھی اس کو عمل درآمد کروائیں گے کہ اسکول کے اندر 100% جو ہے وہ اساتذہ ویکسینیٹڈ ہوں. لیکن والدین کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے, یہ حکومت سندھ کا کام ہے. لیکن ہاں, ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ ہم والدین کو کہیں کہ اپنے سرٹیفکیٹ یہاں جمع کرائیں تاکہ ان کو پریشر بلڈ ہو اور وہ ویکسینیشن کروائیں. کیونکہ ہم ساتھ ضرور دے سکتے ہیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم عوام الناس سے بھی جو ہے نا ویکسینیشن کارڈ چیک کرتے رہیں. کیونکہ یہ نہیں طارق معاملات جو صاحب, ہیں جو یہ بچے حکومت جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اسکول مینجمنٹ یا انتظامیہ ان بچوں کے والدین سے رابطہ کرے گی کہ بھئی آپ کے بچے اگر آپ اسکول بھیج رہے ہیں یا لے کے آ رہے ہیں تو آپ اپنے سرٹیفکیٹ ہمیں شو کرائیں, سبمٹ کروائیں. جی بالکل, یہ ہم کلیکٹ بھی کریں گے اور پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں گے, جی گائیڈ کریں گے کہ آپ بھی ویکسینیٹڈ ہو جائیں تاکہ جہاں ہم اسکول کو سیف انوائرمنٹ بنا رہے ہیں وہاں پر ہم اپنے بچوں کے گھروں کو بھی سیف انوائرمنٹ بنائیں. طارق صاحب کتنا لاس ہوا ہے؟ پرائمری تک دیکھا جائے تو میں نے اچھی خاصی ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتی, یعنی تقریباً 1.5 سال کا جو ڈیفرنس آ گیا تو اس میں کلاسز آن لائن ہو رہی تھی. آن لائن کلاسز کتنی جو ہے وہ فائدے مند تھی, بہت سارے لوگوں کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی, تو بہت سارے لوگوں نے بچوں کو گھر پہ بٹھا لیا کہ بھئی ہم فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے, بچوں کی پڑھائی ویسے ہی نہیں ہو رہی تو ہم کیوں فیسز دیں. کتنے بچے جو ہیں اسکول سے آف ہو چکے ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, یہ ریشو آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ریشو تو ابھی کیلکولیٹ ہو رہا ہے لیکن اندازاً میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جو فگرز آئی ہیں 20 سے 25% بچہ جو ہے وہ مزید آؤٹ آف اسکول ہو گیا ہے. اس کے اندر حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد جو ہے 25% کے اندر وہ ہمارے بچیوں کی ہے جو ہم نے گرلز ایجوکیشن پہ اتنے سال فوکس کیا اور وہ اب سب ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اب تعلیمی اداروں سے ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہٹاتے جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ بالکل. اب اگر لڑکیاں نہیں پڑھیں گی اس قوم کی تو آگے یہ معاملات کیسے چلیں گے. بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسیएशन سندھ طارق شاہ सां गॾु हुनजो चवणो त सूरत-हाल तमामु घणी ख़राबु आहे. जेको आहे सो डेटा कलेक्ट कयो पियो वञे, पर अंदाज़न हुनजो चवणो त 25% जेकॾहिं ॿार आउट ऑफ स्कूल थिया आहिनि त उन में सभ खां जेको वॾो तादादु आहे उहो छोकिरियुनि जो आहे, नियाणियुनि जो आहे. बदक़िस्मती सां तालीम जे हवाले सां जेकॾहिं सूरत-हाल जी ॻाल्हि कजे त इंतिहाई ख़राबु आहे. इन में छोकिरियूं जेके आहिनि तालीम जे हवाले सां तमामु घणो पोइते आहिनि. केतिरा ई अहिड़ा वालदेन आहिनि, असांजी सोसाइटी जी जेका सोच आहे त छोकिरियुनि खे घटि पढ़ाइनि था. इन सूरत-हाल में नियाणियुनि जी तालीम तमामु
तमामु घणी मुतासिर थी आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे प्रोफेसर डॉक्टर सईद ख़ान, डाउ यूनिवर्सिटी इंचार्ज आहिनि कोविड टेस्टिंग लैब जा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो राय है उसके मुताबिक जो है हेल्थ के हवाले से या स्कूल्स के हवाले से, तालीम के हवाले से हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे वज़ीर आला फ़ैसले लेते हैं और उनका कहना है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस होती है डेल्टा वेरिएंट या कोविड के हवाले से हम उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं, जिस पे एजुकेशन के हवाले से जो तालीमी बंदिश का फ़ैसला था उस पर काफ़ी एहतजाज किया गया। क्या जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है हेल्थ एक्सपर्ट्स के ने, क्या सूरत हाल है इस वक्त कोविड के हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन कोविड ने बहुत सारे शोबाजात को इफ़ेक्ट किया है, जिसमें तालीम को उसने बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। और जो गवर्नमेंट फैसले लेती है ज़ाहिर बात है उसमें उनकी सवाबदीद भी होती है और एक्सपर्ट की राय उनके लिए अहमियत रखती है। तो शुरू में जब लॉकडाउन से पहले जो डेटा पेश किया गया था उसमें कोविड के नंबर्स बहुत ज़्यादा थे और जिसकी वजह से ये सजेस्ट किया गया था कि लॉकडाउन लगाई जाए। लेकिन क्योंकि तालीम भी बहुत ज़रूरी है और ये अनलिमिटेड, हम लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते या तालीम बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन जो है उसको मौसर तरीके से जल्द कंप्लीट किया जाए। क्योंकि बच्चों में ये देखा गया कि उसमें बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो घर से स्कूल और स्कूल से वापस ये बीमारी घर तक ला सकते हैं। तो इस दोनों एंड को अगर हम वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट कर लें तो फिर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करना चाहती है, लेकिन इसमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है कि तालीम मुसलसल अगर हम बंद करेंगे तो उससे भी काफ़ी हर्ज आएगा। और गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी उन्होंने फ़ैसला किया है कि 31 तारीख से स्कूल खुलेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन पेरेंट्स की भी हो और असातिज़ा की भी हो ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैल सकें। क्योंकि ये देखने में आया था कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो बीमारी के फैलाव का ज़रिया बनते हैं। ख़ुद उनको इतनी शदीद बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर घर में कोई बीमार है तो जाके असातिज़ा को इन्फेक्ट करा सकते हैं और असातिज़ा से घर ये बीमारी ला सकते हैं। तो लेकिन हमें ये ख़दशा बिल्कुल मौजूद रहेगा क्योंकि बीमारी तो जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। कोविड की जो पेंडेमिक है ये काफ़ी ज़्यादा अरसे तक रहेगी, तो हम अनलिमिटेड अरसे तक स्कूल बंद भी नहीं कर सकते। तो हमें बेहतर कोई तदबीर करनी चाहिए, लेकिन वो इज्तिमाई फ़ैसले होने चाहिए, उसमें स्कूल्स और गवर्नमेंट को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो स्टूडेंट का लेकिन इस वक्त जो फैसला किया गया था कि भाई 10 मुहर्रम हराम के बाद जो कोविड की शरह है उसमें तेज़ी आई है, 16% रेशो सिर्फ सिंध की राजधानी कराची का बताया जा रहा है। तो उस सूरत हाल में क्या गवर्नमेंट का स्कूल बंद करने का जो फैसला था 30 अगस्त तक, उसके बाद हुकूमत आसानी, तो ये क्या दुरुस्त फैसला था जिसको चैलेंज किया गया, जिसके खिलाफ मुजाहरे किए गए? हर फैसले के फ़ायदे नुकसान होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ सेहत वाइज ले लें तो आप बंद करना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप सेहत को सेक आप एजुकेशन भी नहीं कर सकते और वाइस वर्सा भी नहीं कर सकते। तो बीच का रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी है कि नुकसान भी बच्चों का ना हो, उनकी जान भी कीमती है लेकिन उसका तालीम भी कीमती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर दोनों मिल बैठ के इस पर लाहेअमल बनाए। कि बंद करना, मुसलसल स्कूल बंद करना ये कोई मतलब बहुत अहसन इकदाम नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल है, आगे इनको पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, तब जाके आगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कौम का सरमाया है। पूरा साल हमारा एजुकेशन में काफ़ी बंदिशें रहीं और अभी नंबर्स काफ़ी ऐसे हैं जिसमें हम बेहतर फैसले कर सकते हैं और गवर्नमेंट करने भी जा रही है। जो मेरे इत्तलात हैं, गवर्नमेंट ने 31 तारीख से स्कूल खोलने का कहा हुआ है अगर वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाती है। आवाम का मसला ये है कि आवाम को इस तरह बंदिशों से काफ़ी मसले होते हैं, लेकिन जब वो वैक्सीनेशन का मरहला आता है, अगर आप उनको बोले SOPs से अमल करें या वैक्सीनेशन करवाएं तो उसमें बहुत पशुपेश करते हैं। अभी काफ़ी लोग अब ऐसे होंगे वालिदैन में भी, असातिज़ा में भी, जो वैक्सीनेशन कराने से वो कतराते हैं और वो वैक्सीनेशन नहीं करते। तो अगर वो दोनों साइड इतनी के अलार्मिंग सूरत हाल थी कि हुकूमत को सिर्फ स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। मार्केट्स खुली हैं, बाजार खुले हैं, आउटडोर खुले हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुले हैं, प्लाजा खुले हैं। ज़्यादा जो टकराव और इख्तलाफ था वो इसी बात पे था कि SOPs के साथ अगर दूसरी जगह खोल सकती है गवर्नमेंट तो फिर एजुकेशन क्यों नहीं, तालीमी इदारे क्यों नहीं?
یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہم بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے، باقی جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو ہم سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو یہ ایک کنسرن ہوتا ہے کہ بچے کیونکہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، وہ ایس او پیز پہ اتنے صحیح عمل نہیں کر سکتے. سو اگر آپ ان بچے بہت کم عمر کے ہیں اور وہ آپ ان کو ماسک پہنائیں تو ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ اس کا ماسک نہ ہونا، تو وہ ان کی ذمہ داری خود لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ظاہری بات ہے، ایک ایسا رسپانسبلٹی ہے کہ خدا نخواستہ ابھی محرم کے بعد خدشہ تھا کہ ایس او پیز پہ اگر عمل نہیں ہوئے تو اس کے بعد نمبرز بڑھنے کے چانسز تھے. لیکن یہ تو خدشے مسلسل چلتے رہیں گے. ابھی اس پہ ہمیں بہتر ڈیسیجن لینے چاہیے اور بند کرنے کے بجائے کھولنے کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایس او پیز پہ عمل کریں، ویکسینیشن کروائیں، اور مزید چیزیں نہ، مزید نقصان تعلیم کا نہ ہو، اور آگے جا کے ہم بہتر اقدامات کر پائیں. کیونکہ بند کرنا ایک ایزی عمل ہے لیکن وہ احسن عمل نہیں ہے، کہ اس سے ساری چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. سوائے اس کے کہ آپ کا کنسرن کہ بچے متاثر نہ ہو اور کورونا نہ پھیلے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں علم بھی پھیلانا ہے اور ایجوکیشن کو بھی آگے لے کے جانا ہے، جس کے لیے ہمیں ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس سے بچے بھی متاثر نہ ہو اور تعلیم بھی متاثر نہ ہو، بلکہ اسکول بھی کھلیں اور باقی جو ایجوکیشن یونیورسٹی وہ بھی کھلیں اور ایس او پیز پہ بھی عمل ہوتے ہوئے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ جب کھل جائیں تو پھر کوئی ماسک نہ پہنے، کوئی ویکسین نہ لگائیں، تو اگین پھر وہی خدشہ رہے گا اور پھر گورنمنٹ حق بجانب ہوگی کہ دیکھا ہم نے بولا تھا کہ اسکول نہ کھولیں، اب جب کھل گئے تو نمبرز بڑھ گئے. تو ایسے حالات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور پیرنٹس، اسکول اور سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. میں مسلسل اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہماری کلیکٹیو وزڈم ضروری ہے. یہاں پہ سب لوگ ایک ساتھ اس میں اجتماعیت انوالو ہوگی تب بات بنے گی. اگر ہم ایک بندے پہ ذمہ داری ڈالیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی اور یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپس کی جو توانائی ہے، جو آج اس طرح توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انرجی بھی ضائع ہو رہی ہے، ایس او پیز پہ بھی دوبارہ عمل نہیں ہوتا، بیماری اور بڑھ جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور جو حکمران ہیں وہ بھی اور جو اسکول انتظامیہ ہے وہ بھی، اور وہ آپس میں بیٹھ کے اس کا بہتر حل نکالیں تاکہ مستقبل میں اس چیز کی ضرورت نہ پیش آئے، نہ بند کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ احتجاج کرنے کی ضرورت پیش آئے. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ اور جو ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ یا کرونا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، جبکہ ہم نے بہت زیادہ اس طرح کے کیسز دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کو اب اسی کے ساتھ سروائیو کرنا ہوگا یا پھر یہ کووڈ کا کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ بھئی اب سال بعد ختم ہو جائے گا، 2 سال بعد ختم ہو سکتا ہے، یا پھر اسی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا پڑے گی کچھ سالوں تک؟ بالکل کورونا کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور اس کو ہمیں کہتے ہیں نیو نارمل. ہمیں ایک نیو نارمل کی طرف جانا چاہیے، جو اس کو ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر ہم آنکھیں بند کریں گے کہ بھئی کچھ نہیں ہے تو بھی پھر بات نہیں بنے گی. اور ہاسپٹل اگر آپ جاتے ہیں وہاں آئی سی یو دیکھتے تو لوگ اس کی وجہ سے کافی اموات بھی ہو رہے ہیں. آج بھی آپ نے سنا ہے کہ ڈاکٹرز کی بھی ایون ڈیتھس ہوئی ہے. تو یہ تو ایک ریئلٹی ہے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو نظر انداز کریں گے. کورونا ایک ریئلٹی ہے لیکن اتنا حاوی بھی نہ کرے کہ بھئی کوئی کام ہی نہ ہو، ہر چیز بند ہو اور بازار بھی مسلسل بند ہو، اسکول بھی بند ہو، تو وہ تب بھی بات نہیں بنے گی. اگر ہم ایس او پیز پہ عمل کریں، اور ایس او پیز ایک نارمل اب طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جب بھی باہر جائیں تو ماسک آپ کے پاس ہونا چاہیے، ویکسینیشن کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ریئل میں ویکسین لگانی چاہیے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے اگر دوبارہ ضرورت پڑتی تو گورنمنٹ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. تو اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا کم سے کم سال تک. تو یہ بات اس طرح کنسسٹنٹ چلے گی اور آگے جا کے پھر اکا دکا کیسز ہوں گے تو تب حالات مزید بہتر ہو جائیں گے. لیکن ابھی صرف ہمارے پاس 30% ویکسینیشن ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں شور شرابے کے باوجود بھی صرف 30% ویکسینیشن کمپلیٹ ہوئی ہے. 70% جو ایلیجیبل پاپولیشن ہے ابھی تک انہوں نے ویکسینیشن کرائی ہی نہیں ہے. تو سیریسنیس اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اگر ہم اتنا ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اسکول نہ بند ہو اور بازار بند نہ ہو، مارکیٹیں بند نہ ہو، تو ضروری ہے کہ تقریباً 100% نہیں ہے تو 80-90% لوگ تو ویکسینیشن جلد سے جلد کروا لیں تاکہ یہ معاملہ مطلب مکمل طور ختم ہو جائے اور یہ ایس او پیز اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے سب کے لیے. لیکن سیریسنیس عوام کی اتنی ہے کہ ابھی تک صرف 30% لوگ جو ہے ویکسینیشن کروا چکے ہیں. باقی 70% لوگ جو ایلیجیبل ہے ویکسینیشن کی انہوں نے اب تک ویکسینیشن نہیں کروائی. प्रोफेसर डॉक्टर सईद असां सां गॾु हुन जो चवणु हो त माण्हुनि खे जेकॾहिं कोविड जी खां बचाव जे लाइ SOPs ते अमल कनि, वैक्सीनेशन कराइनि,
त पोइ माण्हू नॉर्मल लाइफ तरफ़ मोटी सघे थो। जेकॾहिं असां चाहियूं था असांजा स्कूल खुलियल हुजनि, असांजी मार्केट्स, असांजी बाज़ारूं, असांजी सिहत बहितर हुजे, त पोइ असांखे पाण खे वैक्सीनेटेड कराइणो पवंदो, वैक्सीनेशन कराइणी पवंदी ऐं SOPs ते अमल करिणो पवंदो त जीअं इन बीमारी खां, इन वायरस खां बची सघिजे। डॉक्टर साहिब जो इहो बि चवणु हो त माण्हुनि जी संजीदगी जो अंदाज़ो इन मां लॻाए सघिजे थो त हिन वक़्त ताईं 30% माण्हुनि वैक्सीनेशन कराई आहे, जॾहिं त 70% माण्हुनि हुकूमत जे एॾे सख़्त दबाव जे बावजूदि अञा ताईं वैक्सीनेशन नाहे कराई। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु स्कूलनि ऐं तालीम वारे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना मल्हार साहिबा। इरफाना साहिबा, भली कार चवां थी, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। इरफाना साहिबा, छा चवंदो लाॻीती तालीमी बंदिश ऐं इल्मी दरसगाहुनि खे ताला लॻण जे हवाले सां जेको एहतजाज थियो, उन खां पोइ हुकूमत ते प्रेशर पियो ऐं अॼु नेठ इहो फ़ैसिलो सिंध गवर्नमेंट खे वापसि वठिणो पइजी वियो त भई SOPs सां जॾहिं ॿिया सभु इदारा खुली सघनि था, कारोबार खुली सघे थो, मार्केट्स खुली सघनि थियूं, त पोइ स्कूल छो नथा हली सघनि? छा चवंदो? असल में सभिनि हिन तालीम जो मामले खे एॾो पॉलिटिसाइज़ करण जी एतिरी ज़रूरत कोन्हे का। अगरि असां सूरत हाल ॾिसूं पिया त रुॻो सिर्फ़ु पाकिस्तान आइसोलेशन में कोन्हे, पूरी दुनिया जा तव्हां अंग अखर खणी ॾिसो त उते कंहिं तरीक़े सां अमल दरामद थियो आहे। स्कूल, कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटीज़ उहे दरसगाहूं जेके इहे इदारा आहिनि जंहिंमें सुबुह जो 8 बजे खां वठी शाम जो 4 बजे ताईं ॿार पढ़नि था ऐं 8 कलाक रोज़ मुसलसल जी जेका इंटरेक्शन आहे उन में तमामु घणो चांसिस हूंदो आहे त वायरस खे, ॿारनि खे पाण खे वायरस न थिए पर उहे कैरियर हूंदा आहिनि, जंहिंजे करे पूरी दुनिया में इहा हुकूमत अमली रखी वई त जेके आहिनि से लॉकडाउन लॻायो वियो ऐं स्कूल, यूनिवर्सिटी ऐं तालीमी इदारा बंदि कया विया। एतिरे क़दुरु जो यूरोप ऐं इंग्लैंड जहिड़नि तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में बि इहा साॻाई हुकूमत फॉलो कई वई। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त इहो वायरस जो जेको सिलसिलो आहे, जेके असांजे माण्हुनि जो गैर ज़िमेदाराना रवैया आहिनि, SOPs खे फॉलो न करणु, वैक्सीन खे न लॻाइणु, त छा इहो वायरस जेको असांखे लॻे थो त अॻियो साल अञा बि इहो ईअं ई रहंदो, छो त असांजी सूरत हाल जेका असांजे माण्हुनि जी आहे उहा सभिनि जे साम्हूं आहे। त उनखे ॾिसंदे थोरा एक्सेप्शनल फ़ैसिला वठणु घुरिजनि ऐं ख़ासि तौर ते तालीमी इदारनि जे हवाले सां जेको 50-50 वारो हुयो, अटेंडेंस वारो फ़ैसिलो हुयो, उनखे अगरि लेटर एंड स्पिरिट्स में इम्प्लीमेंट कयो वञे, 50% स्टाफ ऐं 50% टीचर्स अचनि। ॿी जेका हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे करणु घुरिजे आहे, 2 साल टिर्गो अरसो त गवर्नमेंट खे ब्लैंकेट लॉकडाउन ऐं ब्लैंकेट शटडाउन न करणु घुरिजे। हाणे ईअं थियो आहे त अगरि कराची में 1000 केस थिया आहिनि, सॼी सिंध में लॉकडाउन थी थो वञे। अगरि हैदराबाद में हिन महिल पॉज़िटिविटी रेशो 3 आहे त सॼी हैदराबाद में, दादूअ में 5 केस थिया आहिनि त सॼी सिंध जा तालीमी इदारा बंदि कया वञनि पिया। इन लाइ असांखे हुकूमत अमली जोड़नी पवंदी त हिन वायरस सां गॾु रहणु कीअं सिखणो आहे ऐं हिन वायरस जे मौजूदगीअ में तालीमी अमल जी जेका पार्शल तरीक़े सां बहाली आहे उनखे कीअं अॻियां खणी हलणो आहे। बाक़ी जेको एहतजाज करे रही आहे प्राइवेट स्कूल माफ़िया या जिन माण्हुनि खे अचानक लॻे थो त 2 ॾींहंनि ते तालीम जो जेको आहे सो दौरो पियो आहे, उहो बि हिकिड़ो अनजस्टिफाइड रिएक्शन आहे। उहे माण्हू हक़ीक़तुनि खां ॾाढो परे आहिनि। उहे माण्हू बि इहो सम्झण जी कोशिशि न पिया कनि त या त हू वैक्सीन कराइनि ऐं सोशल डिस्टेंसिस खे फॉलो कनि। अगरि हू नथा कनि त गवर्नमेंट में जेॾी महिल हॉस्पिटल्स ते प्रेशर ईंदो, जीअं इंडिया जी सूरत हाल असां तव्हां सभिनी ॾिठी, जीअं हिन महिल वियतनाम जी सूरत हाल आहे, सिडनीअ जी सूरत हाल आहे, त सुभाणे पाकिस्तान में ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ी सूरत हाल थी त इहे साॻाई माण्हू वरी एहतजाज कंदा त ऑक्सीजन सिलेंडर न पिया मिलनि। तंहिंजे करे कंहिं बि क़िस्म जा एक्सट्रीम जेके असां वटि रवैया आहिनि, मां उन्हनि जे हक़ में न आहियां। सरकार खे पंहिंजी मोडिफाई करणी पवंदी, इरफाना साहिबा, तब्दीली आणणी पवंदी। इन लाइ इहो ज़रूरी हो त सिंध सरकार या तालीमी माहिरनि सां वेही करे का मुस्बत या मौसर पॉलिसी जोड़े हा त हिन वक़्त ताईं सूरत हाल इहा न हुजे हा। जीअं ब्लैंक बिल्कुलु लॉकडाउन लॻी वियो, तालीमी इदारा बंदि थी विया, त इन ते ॿारनि जो तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। ॿार 1.5 साल जे बजाए 10 साल पोइ ते हलिया विया आहिनि। असल में इहे हिकिड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आहिनि। अवल त असांजी तालीम जी सूरत हाल तव्हां सभिनी खे साम्हूं आहे। अगरि हक़ीक़ी अंग अखर ॾिसो त हिन महिल बि 44% ॿार जॾहिं फुल क्लासिस हलनि पिया त 6 खां 15 साल जी एज जा 44% ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। उन खां पोइ वॾी तादाद में ॿार मदरसनि में रजिस्टर आहिनि ऐं 60% जेका प्राइमरी तालीम आहे प्राइवेटाइज़ थी चुकी आहे।
सिर्फ़ु 40% जेके असांजा सरकारी स्कूल तालीम ॾेई रहिया आहिनि त इहा असांजी जेका स्टेटमेंट्स आहिनि त भई हीअं थी वियो उहो न थियो। हिन महिल पूरी दुनिया में इहो दुनिया में अमल थियो आहे। जॾहिं असांखे इहो ॾिसणो पवंदो त सिहत ऐं तालीम खे पेरियाटाइज़ करणो पवंदो त पहिरीं सिहत खे अवलियत ॾियणी पवंदी, उन खां ॿिए नंबर ते तालीम खे रखणो पवंदो। ऐं इहा ॻाल्हि असांखे सम्झणी पवंदी त गवर्नमेंट जी पेरियारिटी लिस्ट छा आहे। हाणे इहो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु जाइज़ आहे त जॾहिं कोरोना आयो 1 साल ताईं वॾो अरसो हुयो त हिन ते कंसल्टेशन करे का पॉलिसी ठाही वञे हा, का तालीमी कॉन्फ्रेंस घुराई वञे हा ऐं इन जो का रस्ता कढिया वञनि हा। पर गवर्नमेंट वटि सिहत खां पोइ जेको ॿी अहम शोबो हुजणु घुरिजे उहो तालीम आहे। पर हिते इकानमीअ खे तालीम ते प्रिपेयर कई थी वञे। जिते इकानमी इम्पैक्ट थिए पई त भई इंडस्ट्री खोले छॾियो, उन खां पोइ मज़हबी त्योहार सभु इजाज़त आहे, हलो आहे, सियासी जलसा सभु इजाज़त आहे, तव्हांखे कयो वञे। सिर्फ़ु तव्हां तालीमी इदारा बंदि कंदो त इन सां कोरोना कंट्रोल न थी सघंदी। तंहिंजे करे असांखे इहे सभु हक़ीक़तूं साम्हूं रखी ऐं हिकिड़ी अहिड़ी पॉलिसी जोड़णु घुरिजे जंहिंसां अस्पतालनि ते ॿार बि न अचे ऐं तालीम जिन इलाइक़नि में कोरोना घणो आहे उते यकीनन इदारा बंदि थियणु घुरिजनि। जिन इलाइक़नि में घटि आहे उन्हनि खे तव्हां ओपन करे छॾियो त उते जा ॿार स्कूलनि में वञनि, उते जा ॿार कॉलेजनि में वञनि, उते जा ॿार यूनिवर्सिटियुनि में अचे पंहिंजी तालीम हासिल कनि। ख़ासि तौर ते यूनिवर्सिटियुनि में जेके ॿार अचनि था, स्टूडेंट्स अचनि था, उहे ॿार न आहिनि, उहे अडल्ट आहिनि, 18 खां 24 सालनि जी उमिरि जा आहिनि। उन्हनि खे इहा अवेयरनेस ॾेई सघिजे थी त उहे जी SOPs ते अमल कनि। ऐं उनजो एग्ज़ाम्पल इहो आहे त ताज़ो ई सिंधी यूनिवर्सिटी हिकिड़ी तमामु वॾी यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमें 10 इन खां अगस्त खां वठी 15 अगस्त ताईं फिज़िकल एग्ज़ाम वरिता विया। वॾे तादाद में शागिर्द आया पर उन्हनि SOPs ते अमल कयो ऐं उहे जेके से कामयाबीअ सां एग्ज़ाम थिया। को बि हिकिड़ो हॉस्टल जे अंदरि या फैकल्टीअ में कोरोना केस रिपोर्ट कोन थियो। त इन मां इहो असां चई सघूं था, या नंढड़ी सक्सेस स्टोरी आहे त संजीदगीअ सां अगरि SOPs ते अमल कयो वञे ऐं वैक्सीनेशन ते ज़ोर ॾिनो वञे। तव्हां ॾिसो त जेकॾहिं असां तालीमी इदारा बंदि करे ॾियूं था त छा वैक्सीनेशन वधे पई? जेके ॿार ॻोठनि में हलिया विया उहे वैक्सीन कोन था कराइनि। पर इन्हनि ई शागिर्दनि ते अगरि तालीमी इदारा खोले ऐं यूनिवर्सिटियुनि में कॉलेजनि में मोबाइल वैक्सीन वेनूं वञनि ऐं उते वञी वैक्सीन लॻाइनि त शायदि 3 महीननि अंदरि सभु ॿार सभु स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स जी थी सघे थी। त अहिड़ियूं खोड़ हुकूमत अमली आहिनि जिन ते सोचे करे इहो तालीमी अमल खे मरहलावार बहाल करे सघिजे इन थो। लाइ ज़रूरी हो बाक़ी त हुकूमत प्राइवेट वन साइडेड फ़ैसिला न वठे हा। तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त को तालीमी कॉन्फ्रेंस, तालीमी गॾिजाणी तालीमी माहिरनि सां घुराया त शायदि के बहितर तजवीज़ूं साम्हूं अची सघनि। इरफाना साहिबा अच्छा इहो ॿुधाए हिकिड़ी ॾियो त ॻाल्हि ॿी बि तव्हांखे जी अच्छा इरफाना हिकिड़ी साहिबा ॻाल्हि ॿी बि ऑनलाइन कंदा हलो भई तालीमी सिस्टम जेको हलियो इन सॼे अरसे दौरान प्राइमरी खां वठी करे यूनिवर्सिटियुनि ताईं, उन में बि शागिर्दनि जो तमामु घणो लॉस थियो आहे। केतिरा ई अहिड़ा वालदेन आहिनि जेके इहे शयूं अफोर्ड नथा करे सघनि, ॻरियूं फीसूं जेके मुसलसल उहे न भरे सघिया, ॿार स्कूलनि मां उन्हनि कढी छॾिया, या ही जेको ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम हो उनखे बि घणा वालदेन अफोर्ड न करे सघिया। इवन यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि पारां अहिड़ियूं दाहूं कयूं वयूं त भई मुसलसल जेको आहे सो नेटवर्क वाईफाई या नेट जो इशू थिए थो, या मोबाइल या लैपटॉप जो इशू थिए थो, या अहिड़ा जदीद उन्हनि वटि मोबाइल नथा अवेलेबल हुजनि। इन हवाले सां छा चवंदो? ॾिसो ऑनलाइन सिस्टम त हिकिड़ो मजबूरी हुई त जॾहिं कुझु न पढ़ायल हुजे, को बि रस्तो न हुजे त उन खां बहितर हो त ऑनलाइन कंहिं हा तरीक़े सां शागिर्दनि खे रीडिंग मटीरियल ॾेई उन्हनि खे इंगेज रखिजे, सफ़ा उहे तालीम खां ॿाहिरि न वञनि। उहो इन पर्सन क्लासिस जो पूरी दुनिया में इहा ॻाल्हि मञी वई आहे त रिप्लेसमेंट न आहे, उनजो मुतबादिल कोन्हे को ऑनलाइन सिस्टम। पर इहा ॻाल्हि तव्हां सही पिया चओ त ऑनलाइन सिस्टम में बि रुॻो प्राइवेट स्कूलनि जा ॿार हुया जेके अफोर्ड करे सघनि था। सरकारी स्कूलनि में न सरकार उन्हनि खे मोबाइल प्रोवाइड कयूं, न हायर एजुकेशन कमीशन पहिरें ऐलान कयो त ॿारनि खे वाईफाई प्रोवाइड कयो वेंदो। उन खां पोइ इहो ऐलान कयो वियो त इन ते स्टूडेंट्स खे सस्तियूं मोबाइलूं ॾिनियूं वेंदियूं। उहे सभिनी शयुनि ते रुॻो ऐलान ई रहिजी विया। न स्टूडेंट्स खे वाईफाई ॾिनो वियो, न स्टूडेंट्स खे सस्तियूं मोबाइलूं ॾिनियूं वयूं। ऐं केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि, ॻोठाणा इलाइक़ा आहिनि जिते नेट कवरेज आहे ई कोन। उहे स्टूडेंट्स थर जा केतिरा ई शागिर्द हूंदा हुआ जेके बदीन ईंदा हुआ बस में चढ़ी त उहे ऑनलाइन क्लास वठी सघनि। त बिल्कुलु इहो जेके असां वटि फ़ैसिला थियनि पिया, इहे फ़ैसिला ॿुधाइनि था त असांजी जेका हुकुमरान अक़लियत आहे उहा अक्सरियत जी जेका ज़मीनी सूरत हाल आहे उन खां बिल्कुलु अणवाक़ुफ़ आहे। हू पंहिंजे क्लास खे ॾिसी, पंहिंजे तबिके खे ॾिसी फ़ैसिला वठनि था ऐं उन मुताबिक़ ऐलान कनि था। हुननि खे इहा ॼाण ई कोन्हे का त हिकिड़ो वॾो तबिको आहे जेको इन ऑनलाइन ऐं इंटरनेट जे पूरे अमल खां ॿाहिरि आहे। ऐं जेकॾहिं हू अफोर्ड बि करे सघे थो त उनजी जेका बैंडविड्थ आहे, जेका वीडियो कॉल लाइ ज़रूरत हुजे,
जेका पूरे कलाक लाइ ऑनलाइन लाइ ज़रूरत आहे वाईफाई कनेक्टिविटी, उहा ॻोठनि इलाइक़नि में आहे ई कोन। तंहिंजे करे ऑनलाइन सिस्टम त टोटली हिकिड़ो असां चई सघूं था त फेल्यूअर वियो आहे, उनजो को बि मुसबत नतीजो कोन निकिरी सघियो आहे, जंहिंजे करे ई तव्हां ॾिसो पिया त यूनिवर्सिटियूं, इवन इलीट यूनिवर्सिटियूं बि कोशिशि कनि पियूं त क्लास फिज़िकली हलाए सघूं। त असां त पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वेठा आहियूं। असल में वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। जेतिरो सरकारी ब्यूरोक्रेसी आहे, स्कूल एजुकेशन ब्यूरोक्रेसी आहे, ऐं जेतिरी हेठि ताईं उन्हनि जी सतह आहे, ओतिरी ॿी कंहिंजी कान्हे का। अगरि सरकार हक़ीक़ी तौर ते कमु करणु चाहे त उहा सभु कुझु करे सघे पई। उन्हनि वालदेन जा वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करण बि का हिकु प्राइमरी स्कूल में असां वटि 200-300 ॿार पढ़नि था, उहे ओड़े पाड़े जा हूंदा आहिनि। हिकिड़े हेड मास्टर खे असाइन कंदा त उहे वैक्सीन जा सर्टिफिकेट उन्हनि खे वठी ॾींदा। पर ॻाल्हि इहा आहे त असांजे माण्हुनि वटि कमिटमेंट कहिड़ी आहे। ॿी अहम ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं इहे फ़ैसिला ख़ासि तौर ते यूनिवर्सिटियुनि जा फ़ैसिला वरिता वञनि था त वाइस चांसलरनि खे ऑन बोर्ड वरितो वञे, उन्हनि खां पुछो वञे त तव्हां कीअं मैनेज करे सघंदो। तव्हां बग़ैर स्टेक होल्डर्स जे अप्रूवल जे, उन्हनि जे कंसल्टेशन जे, तव्हां कीअं था तइ करे सघो त हीअ फ़ैसिला हीअं थियणु। ऐं ॿी जेका ॻाल्हि अहम आहे त प्राइवेट स्कूल माफ़िया ऑनलाइन सिस्टम मां तमामु घणो कमायो आहे। उन्हनि जो ख़र्च घटि आहे, उन्हनि शागिर्दनि खां फीस वधीक वरिती ऐं एजुकेशन पाकिस्तान जे आइन बुनियादी इंसानी हक़ आहे। त इहो त उन्हनि जो माना मुतालबो ई न हुजणु घुरिजे त असां तालीम ॾेई रहिया आहियूं। एजुकेशन ॼण सरकार जो फर्ज़ु आहे ऐं सरकार खे ई पंहिंजे हिनखे अपरेटस खे वधीक ऑपरेटिव ऐं करणु घुरिजे त उहा जेका आहे तालीम सभिनी ताईं पहुची सघे। उन सां गॾोगॾु जेके ॿार ड्रॉप आउट रेशो थियो आहे, हिन महिल सरकार जे मथां वॾे में वॾी ज़िम्मेवारी इहा बि आहे त उन्हनि ॿारनि खे वापसि स्कूल ॾांहुं वठी अचे। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अमला साहिबा, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, इरफान अमला साहिबा सां गॾु हुननि जो चवणु हो त हुकूमत जा ग़लति फ़ैसिला हुनजे अॻियां अची रहिया आहिनि। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी हुई त तमामु घणो टाइम हुयो, बजाए जो ब्लैंक फ़ैसिला करण जे हुकूमत खे का तालीमी कॉन्फ्रेंस घुराइणु घुरिजे हा त जीअं उन में तजवीज़ूं साम्हूं अची सघनि। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हाणे जॉइन कयो आहे VC मेहरान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असलम उकेली साहब। उकेली साहब, वरी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। उकेली साहब, छा चवंदो तालीम जे हवाले सां हिन वक़्तु सिंध में छा सूरत हाल आहे जेकॾहिं प्राइमरी खां वठी यूनिवर्सिटी ताईं जी तालीम जी ॻाल्हि कजे त? अजी, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो था हुन प्रोग्राम में तव्हांजी ॻाल्हायां। तव्हांखे ख़बर आहे त जेको पेंडेमिक थियो आहे उनजे करे पूरी दुनिया मुतासिर आहे एजुकेशन जे हवाले सां, ऐं यकीनन सिंध बि दुनिया जो हिसो हुजण जे करे उहा बि मुतासिर आहे। ऐं इन हवाले सां ऑनलाइन एजुकेशन शुरूआति थी ऐं जेके ॿार अवेयर आहिनि थोरा IT सां ज़्यादा, उहे त मुस्तफ़ीज़ थियनि पिया, पर यकीनन जेके ॿार नंढड़ा आहिनि ऐं ख़ासि तौर स्कूलनि जा ॿार, उहे तमामु घणी तकलीफ़ में आहिनि। छो जो उन्हनि वटि हिकिड़ो त तव्हां सिंध में ॾिसो त हिकिड़ो लाइट जो वॾो इशू आहे, ॿियो इंटरनेट जो इशू आहे। हींअर तव्हां ताज़ो पंहिंजे प्रोग्राम में ई ॾिसो त स्काइप जेको त नथो हले, त इहे सभु इशूज़ ज़ाहिर ॿारनि सां बि आहिनि ऐं इन जे करे उन्हनि जी एजुकेशन मुतासिर थिए थी ऐं थी बि रही आहे। ऐं अञा उकेली साहब, बीइंग एजुकेशनिस्ट, तव्हांजी छा राय आहे? हुकूमत पारां जेके हिन वक़्त ताईं तालीम जे हवाले सां फ़ैसिला कया विया उन्हनि ते तमामु घणी तनक़ीद बि थी। तोड़े जो वॾो वज़ीर चवंदो रहियो त जेकॾहिं असां सभु पार्टिसिपेट कयूं, SOPs ते अमल कयूं त उन्हनि खे न लॉकडाउन, न स्मार्ट लॉकडाउन, न वरी कारोबार बंदि रखणु, इन तरह जा फ़ैसिला करणा पवंदा। पर हुकूमत सिर्फ़ु तालीमी इदारनि खे बंदि रखण ते घणो ज़ोर भरियो। कारोबार SOPs सां खुलियल, मार्केट्स खुले। जी हा, इहा तव्हांजी ॻाल्हि कंहिं हद ताईं सही आहे, पर असुलु मसइलो इहो आहे त हेल्थ एक्सपर्ट ई भई ॿुधाए सघनि था ऐं उन्हनि खे ई इन हिसाब सां फ़ैसिलो करणु खपे। ज़ाहिर आहे त सिहत ऐं एजुकेशन इहे ॿ बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि सॼी दुनिया में कंहिं बि सिटीज़न जे लाइ, ऐं ज़ाहिर आहे सिहत हूंदी त एजुकेशन थींदी। पर हींअर जेको रीसेंट वैक्सीनेशन जेको अमल शुरू कयो आहे, ऐं मां सम्झां थो त वैक्सीनेशन जे करे जेका सीरियसनेस आहे हिन जी कोविड जी, उहा बि तमामु घटिजे थी जेके उन माण्हू खे या कोरोना थिए थी। आउं सम्झां थो त जेके असां जेकॾहिं SOPs ते अमल करायूं थोरो जल्दी में सभिनी ॿार सभु जेके ख़ासि तौर ते ॿार ज़ाहिर अरिड़हनि खां घटि खे त वैक्सीन कोन्हे, पर वॾनि खे जेके वैक्सीन लॻी वञे स्कूल वारा त पोइ शुरू करे सघिजे थी। छो जो तमामु वॾो लाभ थी वियो आहे। 1.5 साल खां वधीक थी वियो आहे ॿार स्कूल वञण जी, इवन हुननि जूं हैबिट्स ख़राबु पई थियनि। आउं सम्झां थो हाणे जल्दी इन जे लाइ को पॉज़िटिवली डिसीशन वठणु खपे, बजाए इन जो असां स्कूलूं बंदि करियूं
असां वैक्सीन वारे अमल खे थोरो वधीक तगारो करे हाणे स्कूलूं यूनिवर्सिटियूं खुलणु खपनि। पर उकेली साहब असां वटि जेकॾहिं हेल्थ जी बिल्कुलु न रुगो पाकिस्तान में सॼी दुनिया में हेल्थ सिस्टम ते शदीद दबाव रहियो ऐं कोविड हिकिड़ो बिल्कुलु नओं पेंडेमिक हो, पर हुकूमत वटि तमामु घणो टाइम हो, त न पिया सम्झो त का अहिड़ी जामे पॉलिसी हिकु अहिड़े शोबे जे लाइ जोड़ी वञी हा जंहिंमें एमरजेंसी लागू थियल हुई। एजुकेशन में त असां वटि एमरजेंसी लागू थियल हुई। अॼु हाणे ॾिसो न, एजुकेशन ते एमरजेंसी असां वटि अॻु में बि लॻी हुई। असां वटि मेजर प्रॉब्लम आई इम्प्लीमेंटेशन जो। जी पॉलिसियूं त ॾाढी सुठियूं थियनि थियूं, पर हुन ते अमल थिए न। इवन तव्हां SOP ॾिसो त हुन ते केतिरो अमल थिए पियो। काफ़ी जॻहियुनि ते इवन सरकारी इदारनि में वञो, बाज़ारुनि में वञो, हुन SOP ते अमल ई कोन्हे। ऐं पोइ जेका असांजे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वरी बि इन हवाले सां अमल कनि था। आउं सम्झां थो हाणे घणो परे न आहे, हफ़्तो ॿियो जेकॾहिं हुन खां पोइ खुली थी वञे त हुननि स्कूलुनि खे वरी हिकिड़ी नए सर थोरो फोकस करे उन्हनि जी जेके टाइमिंग वधाई वञे, उन्हनि खे जेको थोरो वधीक एजुकेशन जे हवाले सां कुझु उन्हनि खे सहूलियतूं बि ॾिनियूं वञनि त जीअं हू पंहिंजी एजुकेशन वधीक फोकस नमूने करे सघनि। ऐं हफ़्तो हाणे को परे कोन्हे, हफ़्ते ते अची पहुता आहियूं। ऐं 31 अगस्त ताईं फेडरल गवर्नमेंट जो बि डिसीजन आहे त वैक्सीन खां पोइ तव्हां ॿारनि खे जेको असांजे ख़ासि तौर यूनिवर्सिटियुनि जे हवाले सां असां वटि ज़ाहिर मेजॉरिटी ॿार 18 साल खां वॾा आहिनि, त उहे मुंहिंजे ख़्याल में ऐं असां वटि ॾाढी सुठी फिगर्स अचनि पियूं। अॼु बि मां रिव्यू कयो त असां वटि 80% ॿार वैक्सीन थी विया आहिनि। ऐं इम्तिहान जे हवाले सां असां वटि इम्तिहान त उहो ई हले पियो, पर आउं सम्झां थो त हाणे नेक्स्ट वीक खां असां हिन पोज़ीशन में अची वेंदासीं त सभिनी जेका नॉन वैक्सीनेटेड खे छॾे बाक़ी वैक्सीन वारनि खे असां अलो करियूं त अची पंहिंजी क्लासूं फिज़िकली अटेंड कनि। ऐं ज़ाहिर हुननि ते बि प्रेशर पवंदो, जेके ॿार नई वैक्सीन न आहिनि त उहे बि कराए वठंदा। ओके साहब, आख़िरी सवाल तव्हां खां, ही जेका फिज़िकल अपीयरेंस जो जेको आहे सो गैर मौजूद रही ऐं ऑनलाइन क्लासिस रहिया, इन में पिणु केतिरा ई शागिर्द अहिड़ा आहिनि जेके ॾूरान इलाइक़नि सां तालुक़ रखनि था या जेके अफोर्ड न पिया करे सघनि, जदीद क़िस्म जो लैपटॉप हुजे या बहितर क़िस्म जो मोबाइल हुजे या कंटिन्यूसली जेको नेटवर्क हो, त केतिरा ई शागिर्द उहे ऑनलाइन क्लासिस मां यूनिवर्सिटियुनि जे शागिर्दनि जी मां ॻाल्हि थी कयां, उहे लाभ हासिल न करे सघिया। उहे कीअं अॻियां क्वालिफाई करे सघंदा? उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ नौकरियुनि जे लाइ मुख़्तलिफ़ इम्तिहान ॾियणा पवनि था। उन हवाले सां यूनिवर्सिटियुनि खे ज़ाहिर आहे त वधीक हाणे फोकस करणो पवंदो। असां जेको इहो ई सोचियो आहे त रिव्यू क्लासिस हलायूं थोरी, जिन ॿारनि खे जिन जा रिज़ल्ट वीक आहिनि या जेके रिज़ल्ट कमज़ोर आहिनि उन्हनि खे असां हिकिड़ो ऑप्शन ॾियूं त हू आफ्टरनून में या जेके छो जो यूनिवर्सिटी में सॼो ॾींहुं क्लासिस न हूंदियूं आहिनि, विच में हुननि जा ट्यूटरल क्लासिस बि हूंदा आहिनि, त उन्हनि में हुननि खे कुझु एजुकेशन प्रोवाइड थी वञे। हींअर बि असां जेको प्रैक्टिकल जो इम्तिहान पिया वठूं त प्रैक्टिकल हुननि खे पहिरीं करायूं पिया त जीअं हू इम्तिहान ॾियण जी पोज़ीशन में अचनि। ऐं तव्हांजी बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त इलाही जॻहियुनि ते ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन, पर उन्हनि जॻहियुनि ते जिते 4G 5G नेटवर्क अची विया आहिनि या घटि में घटि 3G मुसलसल मौजूदु आहे। असां बदकिस्मती से अञा ताईं इलाही एरियाज़ में मां पाण ऑब्ज़र्व कयो आहे ऐं कटे जो आहियां त हुते असांजी 3G जी उहा एफिशिएंसी न आहे। त उन हवाले सां ॿारु क्लास अटेंड करे थो, माना अटेंडेंस वठी थो वठे, पर हिकिड़ी ॿी बि आहे त काफ़ी यूनिवर्सिटियुनि रिकॉर्डिंग बि रखी आहे वेबसाइट ते, त जेको ॿारु सफ़ा फोकस आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त ॿारु जेको जेसि ताईं हुनखे ख़ुशि न कबो तेसि ताईं पढ़ंदो न, उनखे जेकॾहिं पाण खे छॾे ॾिबो त उहो न कंदो। वञी करे ई फिज़िकल जो वॾो एडवांटेज इहो ई आहे जो क्लास में मौजूदु हुजे थो, 1 to 1 कम्युनिकेशन थिए थी, आहे कॉन्टेक्ट रहे थो, ऐं छोकिरो जेको थो हुन टीचर जे बिल्कुलु साम्हूं आहे, टीचर हुन खां पुछे थो त हुनखे इन्वॉल्व करे थो। ऑनलाइन में ज़ाहिर आहे त इहे चीज़ूं कोन थियूं थी सघनि ऐं हुनजे करे नुक़सानु थिए पियो। ऐं पर ॿियो को चाढ़ो न आहे सवाइ हिनजे जो हाणे असां हिकिड़ो त असांजे लाइ 2 मेजर कंसर्न आहिनि। हिकिड़ो त टाइम बचायूं, ज़ाहिर आहे ॿारनि जो टाइम इज़ नाउ इन द वर्ड, होल वर्ड टाइम इज़ मनी। ॿारु जेको असांजो टाइमली न निकितो त ज़ाहिर आहे उहो पंहिंजी हिकिड़ी कॉम्पिटिशन में पोयां हली वेंदो। बिल्कुलु सही, सभिनी लाइ ज़रूरी आहे त इन्हनि शयुनि खे फॉलो कजे। वरी महिरबानी उखैली साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़ो ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, अॼोके हार्ट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।